Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to a very important session जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं awards and honors के बारे में and this will be for the year of 2021 the latest awards and honors and हम discuss करेंगे awards and honors in terms of practice MCQs. Alright friends, and very important thing, I'll also be discussing all the Nobel Prize winners of this year in this video after we are done with the MCQs. So आप please video को end तक देखिएगा and after the Nobel Prize winners we'll also have a assignment section जहाँ पे आपको 3 assignment questions मिलेंगे that you will answer in the comment section. Alright friends, so with that I'll begin today's session, but before that I also want to tell you that on novation.in you can go ahead and find the PDFs of the lectures which I'm posting here. So please do visit novation.in and also अगर आपको Novation का content अच्छा लगता है so please go ahead to the donate button and support us. Alright friends, so with that let's start our session. The first question for today: who among the following won the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award? Friends, here the correct answer is D, both A and B. Martin Scorsese and Steven Szabo. Both of them has won the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award, and Mr. Martin is a Hollywood veteran actor, and Mr. Steven is a Hungarian filmmaker, and they have been given this award by the for this year by International Film Festival of India. And this festival, this edition of India International Film Festival will be held in Goa from November 20 to 28. I hope this is clear. Next, who among the following film superstar won the 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सो फिर से फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. हियर द करेक्ट आंसर इज ए, मिस्टर द मेगा स्टार रजनीकांत. So this prestigious award, Dada Saheb Phalke Award, is awarded for excellence in cinematic achievement and is the highest honor in film industry जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है. Okay, so it is a very very important award. आगे बढ़ते हैं. Which of the following countries' army won the gold medal at the prestigious Cambrian Patrol exercise which was held in United Kingdom? सो यूके की आर्मी ने ये जो कंपटीशन है ऑर्गेनाइज कराया था, कंपटीशन और एक्सरसाइज बेसिकली पेट्रोल एक्सरसाइज, एंड इन दिस मेनी टीम्स एंड मेनी कंट्रीज आर्मीज टुक पार्ट, बट इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन दिस exercise. So our winning team was 5th Battalion of Gorkha Rifles Frontier Force, and Indian Army ने total 96 टीमों को पछाड़ा and we got the number 1 prize, and it included 17 international teams representing special forces, prestigious regiments from different parts of the world, yet India was able to successfully become the number 1 team in this patrol exercise. इसको पेट्रोल एक्सरसाइज का ओलंपिक गेम्स भी कभी कभी कहा जाता है. Okay. Next, who among the following won the 22nd Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence? Then here the correct answer is A, Randeep Guleria. So Dr. Randeep Guleria is presently the director of AIIMS. आप लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा. He is well known for his contribution toward creating awareness about the vaccines for coronavirus, or in general awareness about social distancing in coronavirus. So he is also an eminent pulmonologist and the director of AIIMS, as I told you, and he was awarded by Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu. He got the Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence. Next, who among the following was recently awarded the prestigious Aryabhatta Award by the Astronautical Society of India? Friends, here the correct answer is B, G. Satish Reddy. So Mr. Reddy is presently heading or is the chairman of DRDO, and he has contributed immensely to the development of various tactical missiles in India and has helped India become self-reliant in the defense technologies. So that's why Mr. Reddy has got this Aryabhatta Award by Astronautical Society of India. Next question is, who will be conferred with the 2021 Global Leadership Award by the US-India Business Council? Friends, here the correct answer is B, Shiv Nadar. But actually friends, this award is getting shared by 2 people. First is Mr. Shiv Nadar, who is the chairman emeritus of HCL Technologies, and the second person is Mallika Srinivasan, and she is the chairman of Tractors and Farm Equipment Limited,
TAFE for this award. So both of them will be sharing this award. I hope this is clear. Next, which of these banks has been honored as the global winner for most innovative in digital banking by the Banker publication in 2021? Friends, here the correct answer is C, DBS Bank. So आप लोगों को याद होगा दोस्तों, ईयर की शुरुआत में DBS was also named as the best bank in the world. ओके, सो ये भी आप याद रखिए. और DBS बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर एंड द CEO ऑफ DBS बैंक इज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, पीयूष गुप्ता. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following will be bestowed with the prestigious Lokmanya Tilak National Award for 2021? Friends, here the correct answer is D, Mr. Cyrus Poonawalla, and he is the chairman of Serum Institute of India. And उन्होंने जो contribution किया है during the time of pandemic, it is very notable, and due to that he'll be getting this Lokmanya Tilak National Award. And the son of Cyrus Poonawalla is Mr. Adar Poonawalla, जो कि अभी presently उनके जो CEO हैं SII के, वो हैं अदर पूनावाला. सो जो SII ने जो डेवलप किया है वैक्सीन, उसका नाम क्या है दोस्तों? कोविशील्ड. ऑलराइट, सो वी मूव फॉरवर्ड. Name the book that won the International Booker Prize 2021. Friends, here the correct answer is A, At Night All Blood is Black. एंड इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है डेविड डियोप. आपको प्लीज़ ये नाम ज़रूर याद रखना है. ही इज़ अ फ्रेंच राइटर एंड ही हैज़ रिटन दिस अनसेटलिंग बुक which is related to two Senegalese soldiers fighting in the trenches in the First World War. And this has been translated into English by Anna Moskowakis. Okay, so please do remember the name of David Diop and Anna Moskowakis, and the book also. Name the airline which was announced as the winner of Air Transport World's ATW 2021 Airline of the Year. So इसी साल की एयरलाइन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? वो है सी कोरियन एयर. Now friends, it is very unique airline because it has shown operating profit during the peak time of coronavirus pandemic, जहाँ पर सभी पूरी इंडस्ट्री लॉस में थी. they were making operating profit. Okay, so this is due to the company's excellent leadership, its ability to remain operationally profitable throughout the pandemic, and strong commitment to the health and safety of its customers and its employees has helped it to get the Airline of the Year award. And this is for South Korea. South Korean airline है दोस्तों ये. Next, Dash is the only public sector unit company to consistently feature in India to be recognized as Great Place to Work. So friends, आपने कई कंपनियों में देखा होगा उनको ये टैग या सिंबल मिलता है that they are a great place to work. वो दिया जाता है Great Place to Work इंस्टीट्यूट के द्वारा. अब यहाँ पर कौन सी एकमात्र पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसे ये कई सालों से 15 साल से ये मिल रहा है ग्रेट प्लेस टू वर्क का टैग? फ्रेंड्स, ये द करेक्ट आंसर इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC. So NTPC was ranked 38th, up from its position of 47th in top 50 companies to work for in India. आगे बढ़ते हैं. Which of the following tech companies in India has been recognized as the Global Innovation Partner of the Year by Snowflake? So Snowflake is a data cloud company. उसने किस कंपनी को recognize किया as the Global Innovation Partner? Friends, here the name of the tech company is B, L&T Infotech. And this award or this recognition is going to help L&T to make a strong relationship, strong strategic partnership with Snowflake, and will also strengthen the collaboration between these two companies to help solve problems through cloud infrastructure. All right. Next, who won the Pulitzer Prize 2021 in the International Reporting category? So friends, Pulitzer Prize कई categories में दिया जाता है. हम यहाँ बात कर रहे हैं International Reporting category के बारे में, for exposing China's secret Uyghur Muslim detention camp. So हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों. यहाँ पर correct answer is D, Megha Rajgopalan. Now Megha is basically an Indian origin journalist in USA, and along with her two contributors, she has won the Pulitzer Prize for innovative investigative report, and it exposed all the secret mass detention camps which China has built for exploiting और उनको परेशान करना उइघुर मुसलमान को, उनको उनका
धर्म फॉलो ना करने देना, उसके लिए जो भी डिटेंशन कैंप बनाया है उनको इन्होंने एक्सपोज किया है इन द शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना. ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग आई वुड से. ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेम द इंडियन हु वाज ऑनर्ड विद WHO Director General Special Recognition Award. Friends, here the correct answer is B. Dr. Harshvardhan, who is the former Health Minister of India. अभी प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. So Dr. Harshvardhan was instrumental in the national legislation to ban e-cigarettes and heated tobacco products. So इन्होंने हेल्प की थी जब ये अपने हेल्थ मिनिस्टर थे टू पुट अ बैन ऑन ई सिगरेट एंड टोबैको, हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स. उसी के रिकॉग्निशन में इनको ये डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. हु वॉन द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड. सो फ्रेंड्स, हियर द करेक्ट आंसर इज सी, राफेल नडाल. सो नडाल जो कि स्पेनिश प्लेयर है, इनको ये अवार्ड मिला है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर. नाउ जनरल क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है. सो हियर द आंसर विल बी नाओमी ओसाका. शी इज़ अ जापानीज टेनिस सुपरस्टार. एंड किस टीम को ये अवार्ड मिला है वो है बायर्न म्यूनिक, विच इज़ अ फुटबॉल क्लब. देन स्पोर्टिंग इंस्पिरेशनल अवार्ड गोज टू मोहम्मद सलाह. आगे बढ़ते हैं. Which of these singers bagged the Icon Award at the 2021 Billboard Music Awards of 2021? So here the correct answer is D, Pink. And with that, Pink is now included in the list of Neil Diamond, Steve Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion, Janet Jackson, Mariah Carey, etc. in this prestigious list. Now Pink is also added. आगे बढ़ते हैं. Which cricketer was honored with Sir Richard Hadley Medal this year? Friends, here the correct answer is C, Kane Williamson. And Kane Williamson, basically a batsman and a skipper, and the skipper of New Zealand team, has got this award for 4 times in the last 6 years. So that's a very big achievement, I would say. Next, now friends, you have to tell me, name all the 5 Ramon Magsaysay Award winners of 2020. This is a very important thing, guys. Ramon Magsaysay Award is equivalent to the Nobel Prize award in Asia, Southeast Asia and Asia basically. So here, let's see the winners. So let's talk about them one by one. First is Firdausi Qadri. She's from Bangladesh and she's trying to help people get affordable vaccines, right? Then comes Mr. Roberto Ballon. He is from Philippines and he is a community environmentalist and a fisherman. Next comes Mr. Stephen Munshi, and he is also from Southeast Asia and a humanitarian and a peace builder. Next is Mr. Muhammad Amjad Saqib. He is from Pakistan and works toward poverty alleviation. Last one is from Indonesia, of Corporation Watchdog, which is a documentary maker and a media trust crusader. आई होप आपको ये 5 नाम याद रहेंगे. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में. सबसे पहले हम शुरू करेंगे विनर्स इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक साइंसेस. फर्स्ट इज मिस्टर डेविड कार्ड, एंड हिज प्राइज मोटिवेशन व्हाई ही गॉट दिस अवार्ड फॉर हिज एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, सो ही हैज गॉट द half of this prize. Half of this award basically, and he is affiliated to University of California in Berkeley, California, USA. जो बचा हुआ हाफ पार्ट ऑफ अवार्ड है वो 2 लोगों में गया है दोस्तों. एंड फर्स्ट वन इज जोशुआ डी एंग्रिस्ट, and he has got this award for methodological contribution to the analysis of causal relationship between things. And he is affiliated to MIT, Massachusetts Institute of Technology in USA. और इन्होंने जो 1/4 प्राइस है वो शेयर किया है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस के साथ फॉर द सेम प्राइज मोटिवेशन. एंड मिस्टर गुइडो इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ USA. Coming to Nobel Peace Prize, very very important, guys. So the first person who got the half part of the prize is Miss Maria Ressa. She is the co-founder and CEO of Rappler, which is a media company, and is the first person to get a Nobel Prize from Philippines. Philippines की पहली person है जिसे ये award मिला है. Her prize motivation was efforts to safeguard freedom of expression, freedom of speech
फॉर डेमोक्रेसी। और इन्होंने ये जो प्राइज शेयर किया है दोस्तों वो किया है दिमित्री मुराटोव के साथ, हु इज़ अ रशियन जर्नलिस्ट। So he has also got this award for the same reason, in order to safeguard the freedom of expression in a democracy. So आप प्लीज़ दोनों का नाम ज़रूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो इसमें हमारा काम इजी हो गया, एक ही पर्सन को ये अवार्ड पूरा मिला है, वो है अब्दुल रज़ाक गुरना, एंड ही इज़ बेसिकली रिसाइडिंग इन UK बट ही वॉज बॉर्न इन तंजानिया. His prize motivation is for his uncompromising and compassionate penetration of effects of colonialism and fate of refugee in Gulf between cultures and continents. So that's why he has got this award. आगे बढ़ते हैं. Now comes the Nobel Prize in Chemistry. So chemistry में भी प्राइज शेयर हुआ है दो लोगों के बीच. First is Mr. Benjamin List, who is associated with Max Planck Institute in Germany. And the motivation for the development of asymmetric organocatalysis. And इन्होंने जो हाफ प्राइज शेयर किया है वो है डेविड मैकमिलन के साथ, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, एंड सिमिलर इनका सेम प्राइज मोटिवेशन रहा है. सो दे हैव गॉट द प्राइज हाफ हाफ. आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. अभी दोस्तों 3 लोगों को मिला है. सो ये जो है ये भी हाफ एंड 1/4 में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट, the prize motivation was for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliability predicting global warming. Syukuro Manabe, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, उनको ये 1/4 पार्ट ऑफ द अवार्ड दिया गया है. किसके साथ इन्होंने अवार्ड शेयर किया है? वो है मिस्टर क्लॉस हैसलमैन, हु इज़ फ्रॉम मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इन जर्मनी. इनका भी सेम प्राइज मोटिवेशन रहा है, तो इन्होंने 1/4 प्राइज शेयर किया है. आगे बढ़ते हैं. Now the last person to get the physics prize and 1/2 of the award, इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है. बेसिकली 1/2 इनको मिला है पूरे प्राइज मोटिवेशन के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल. जियोर्जियो बरीसी फ्रॉम सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इन इटली. कमिंग टू द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी. सो यहाँ पर भी 2 लोगों ने हाफ प्राइज शेयर किया है. So first is Mr. David Julius from University of California in San Francisco, and his prize motivation is for their discovery of receptors for temperature and touch. Next, for the same prize motivation, Ardem Patapotian, and he is from Howard Hughes Medical Institute in USA. आई होप आपने सारे नाम नोट कर लिए दोस्तों. बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूरी आपसे पूछा जा सकता है. ऑल राइट, सो नाउ इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट. आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनका आंसर. फर्स्ट इज, हु इज़ द ऑथर एंड विच इज़ द बुक दैट वॉन नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल प्राइज फॉर फिक्शन इन 2021. नेक्स्ट, हु वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड ऑफ 2021. लास्ट इज, who won the Swami Brahmanand Award of 2021. इन तीनों का आंसर आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए. सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल और आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली है, बिकॉज आई हाईली रिकमेंड कि आप इन सभी चीज़ों को नोट करिए और इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए बिफोर योर एग्जाम्स. So if the video was helpful, please give it a like, share it with your friends and subscribe to Novation for more such important videos. And मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको Novation का कंटेंट अच्छा लगता है, so please support us, please encourage us with your donations. Alright friends, so with that I'll close today's session. I'll meet you again very soon. Until then, bye bye, and please take good care of yourself. Bye bye.